शामिल शरीक होकर के चाहता था कि उसमें उससे कुछ सीख भी सकूं और कुछ सिखा भी सकूं। बेसिकली आज है ना, बच्चों को हमें गीता के बारे में और अपनी कल्चर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में उनको अवेयरनेस कराना बहुत जरूरी है। ISKCON द्वारा आयोजित बच्चों के लिए गीता पर आधारित एनवायरनमेंटल के लिए, एजुकेशन के लिए और जो बेसिक मूल्य हैं, जो जीने की कला है, उसके लिए जो प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी संस्थाओं को। I think this should be popularized all over and more schools. I would request each and every school principal to conduct Value Education Olympiad in their school, and I wish all the best to VEO team. Simply imparting education is not sufficient. We need to involve children in some practical action also. So, as a part of this program, we are going to involve children in planting around 2 lakh trees within their school compounds. We had major partnerships helping us take this cause forward. I am grateful to United Nations Environment Program. We reached out to them, they kindly agreed, and officially ISKCON is a partner for this cause. We reached out to our own Ministry of Environment, Government of India. They also agreed and came on board. Collaborating with Directorate of Education, we wanted to do this program even for tribal children. We reached to Ministry of Tribal Affairs, and with their help, we could reach out to these children in 7 states with this program. So, behind every major endeavor, there are certainly challenges. The first direction that we were given from UNEP or from Ministry of Environment was that this program had to be completely complementary. No child would pay anything for this program. And we're very grateful to companies like SMC, Globe Capital, Richa Global, and many others who stood and supported us for having this program up and running. So what do we envision for future? How to take the road forward? In order to help children be part of this program in a more easier way, fun-loving way, we are thinking to gamify the learning experience. Maybe have the learning experience in a gaming platform or in a mobile platform. And also, if this program can reach out to more languages, learning in their own vernacular language is far easier. So besides English and Hindi, we can include more languages so that it becomes easier for children to learn and benefit from this program further. These are some of his thoughts to improvise our program in the coming years. Thank you. We would request the technical team to give us more insight in the video. Hello. We would request the technical team to give more insights in the video.
नहीं आएगा वो करने वाले कोई नहीं आए कोई बुरा ही नहीं है देखा यार Hare Krishna. Hare Krishna to everyone. I welcome you all, including our honorable chief guests, honorable guests of honor, position holders from different corners of the world, and those who have joined us live from across the globe. You all are as welcome as the flowers in May. Values are the quality on which worth, desirability, and utility depend. The United Nations asks faith-based organizations to take the lead and inculcate values amongst the people. The International Society for Krishna Consciousness, ISKCON, popularly known as the Hare Krishna movement, to take the initiative and start conducting Value Education Olympiad for school students. आज हम सर्वोदय सहशिक्षा विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी के छात्र इस्कॉन की ओर से इस कार्यक्रम की एंकरिंग करने जा रहे हैं. We request Shri Yudhishthir Govind Das Ji to welcome our honorable chief guest, Shri Bhupender Yadav sir, who is Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. We are delighted to again request Shri Felicitation Ji to welcome our learned Director of Education, Mr. Himanshu Gupta sir. We may again request Shri Rukmini Das Ji to welcome Mr. Ripu Daban Bevli sir, who is an environmentalist and social activist. We would request Karuna Chandra Das Ji to welcome Shri Lakshmi Goyal Ji. We would request Murli Krishna Das Ji to please welcome Mr. Asit Gopal, who's Commissioner, Eklavya NESTS Schools. We welcome our guest, Dr. Vibha Dhawan. I would request Shri Murli Krishna Das Ji to welcome ma'am, please. She's Director General, Terry. We would welcome Ms. Divya Datta from United Nations Environment Program. I would request Karuna Chandra Das Ji to please welcome Divya Datta from United Nations Environment Program. Fire represents luminescence and brilliance. It acts as a dispeller of darkness. As soon as the fire is lit, darkness flees away. Similarly, the lamp being offered to the Lord dispels the darkness inside the heart of the devotee. Now we will have a traditional auspicious lamp lighting ceremony.
मैं माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, डॉक्टर विभा धवन मैम, श्री असित गोपाल जी, श्री नरेंद्र गोपाल जी, श्रीमती करुणा चंद्र दास जी, श्री विनायक गर्ग जी व श्री हिमांशु गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं और आज की उल्लेखनीय शुरुआत के लिए प्रार्थना करें। We also have amongst us Mr. Vijay Sardana, and we would like to welcome Sir. We would request Karuna Chandra Das ji to please welcome Mr. Vijay Sardana ji. We also have Mr. Gyanendra, who is an academic head for Jawahar Navodaya schools. May we please request Karuna Chandra Das ji to please welcome him. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Most welcome, ma'am. Thank you, sir. Value education is essential for the holistic growth of an individual as well as the society. It provides a positive direction to the students to shape their future, helping them become more responsible and sensible in comprehending the purpose of their life. What are the main highlights of Value Education Olympiad 2022? For this, we would like to invite Dr. Suruchi Mittal ma'am, who is an accomplished academician, an author, international consultant, and a coach who has been contributing selflessly towards the Value Education Olympiad to present the highlights of Value Education Olympiad 2022. Good evening, good morning, good afternoon. Greetings of peace and prosperity to each and everyone sitting here in this hall, standing backstage, and to all our viewers who are watching us live at ISKCON Punjabi Bagh YouTube channel. It's my privilege to welcome to this event all the present dignitaries, principals, teachers, my dear students, parents, devotees, and the volunteers who have worked so hard for this program. Allow me first to congratulate ISKCON for designing and crafting a program where every student in this age group of 10 to 18 can participate across the globe. Having been associated with International Value Education Olympiad for last 3 years, I am filled with happiness to mention that we are getting bigger each year. With more and more participants, with more collaborators, with more combinations of people who can actually join this movement together, more keen involvement from the community. This stands as a testimony to the fact that we as human beings at varied levels are anchored to a core value system. We all know that we are facing a multitude of challenges, including the catastrophic challenge of climate change, which is devastating each one of us. We are facing the threat of extinction of biodiversity, the problem of pollution, emergence of new diseases,
growth, development. And these challenges are only because of us. Overconsumption of our natural resources and because of our greed. Science says we consume more than what is given to us, and we would need 2 planets soon. I don't think we have another one. And this led ISKCON Punjabi Bagh to adopt, if I could say, a corrective, ethical stance to collaborate with Ministry of Environment. And we are very grateful, sir, for you being here and even giving that direction and vision to do this program with United Nations Environment Program. I really thank Divyaji for being here. Both ISKCON and UNEP are motivated to work towards one common goal. We feel that the world needs to pick up the pace and more significant efforts in finding better solutions to transform societies, economies for the better. And what better way to inch towards the goal than tapping our young minds and challenging their inner intellect in this direction. Can we move? The challenge, basically, I would like to go back to the previous slide, please, to let everyone know our collaborators. Yeah. So our collaborators, basically, we actually, I would like to tell you a small little thing about our collaborations. Last year, we were fumbling in COVID, and we were looking here and there, wherein we actually reached out to Sir's office, and we said that, Sir, we are doing this program. He gave us an appreciation letter, and he said we would like to do a collaboration next year. That gave us motivation. And this year, without even mentioning, they gave us collaboration in the first month that we asked for. And we are very, very thankful, sir, for that collaboration. United Nations Environment Program came up with a very, very enthusiastic, a very different program called Faith for Earth. And Faith for Earth is looking for faith-based organizations who can actually work towards environment. And that is where ISKCON took that initiative and that step forward. And we said we would be looking forward with this program, not through just preaching, but preaching about the environment. So we have our Faith for Earth counselor, who's Gaurang Das ji, who's not physically present here, but he's definitely with us online. We got our collaboration from Ministry of Tribal Affairs, and Mr. Asit is here sitting with us, Commissioner. We are very, very thankful. Reaching to his office was not that difficult, and he said, we are with you. And 25,000 students, 7 states, 77 schools, he immediately granted in first meeting, and we are very, very thankful to you, sir. Delhi Directorate of Education, salute to you, sir. Thank you very much for everything. We just met him, and we were very surprised. We saw him, and we said, where is sir's office? And he was sitting there right in the green garden, and the environment-friendly aspects of the complete environment understanding. And he said, yes, we will go for this program. Thank you very much, sir. Thank you. Learning Spiral, who has been definitely a bone for us, and thank you very much, the backbone, the technology partners. We have our learning partners here. Thank you very much for that collaboration. Thank you very much. So we move to the next slide, please. Thank you. The challenge was that people around, UNEP said, the challenge is people around the world should have the opportunity to develop the knowledge, the skills they need to build in a sustainable future. And ISKCON's Green Value Education Olympiad said, education on green values, and we promote the lessons from our scriptures that we must fulfill. And that is where the step was taken and the charge was taken. Next slide, please. Thank you. The motto we set, we must engage youth in environmental protection. Children who are the least responsible for this climate change, they will suffer the consequences of the environment changes the most and longest time. I think we need to educate, we need to build onto a system wherein the students can actually come together, not just with their understanding of the environment, but actually doing what actually needs to be done for the environment. Next slide, please. We reached to COP26, and we have, our Prime Minister, sir, has already launched basically the LIFE program, which actually says Life for Environment. And this program was introduced for environment, for the
consequences of the environment. For the development to happen, as Sir said, we don't have to dismantle and degrade our green assets. Next slide, please. Our objective was to educate students, making youth responsible for giving solution and be a part of the solution. Future conservation by planting trees. Next slide. Our outreach this year, we reached out to all the private, public, national, international schools, and we touched around 252,500 students. 2,000 schools all across the globe. And then we found Kendriya Vidyalaya. We are very, very thankful to Mr. Nagendra Goyal ji, and we are very, very thankful to Mr. Vinayak, Commissioner Jawahar Navodaya. We are very, very thankful to Mr. Gyanendra ji, who's sitting here amongst us. Saraswati Bal Mandirs, and I think it became like a movement, you know. And how they say, मैं अकेला ही चला था. लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया. So it moved like that. This year, it moved like that. Eklavya schools gave us 25,000 students and from 77 schools and seven states. All students, all Delhi government school students participated in this program. And all Delhi government schools, I want to tell you, this was one of the shortest program. This was one of the shortest program in terms of the timelines. We actually talked about it after the MCD elections, and we said that we have to do it on 16th of January. And that was the short timeline that all the government school principals, all the school teachers just jumped into it and kind of collaborated, and they said that this is the vision we want to give it to our students. So thank you very much. We reached around 20 countries. And our international reach, we also want to tell you, the ISKCON community also came together. Our communication head, environment head, Anuttama Das ji actually became very, very active, and he said that we will reach out to all the ISKCON temples all across the globe. And through that, we actually reached out to various schools, various students, various devotee communities, etc., etc., etc. We actually had devotees in Dubai, Aditya Samidha, who are actually on the watching live, Miss Anusha, who actually worked with various other countries. So thank you very much to all of you. Our study material, I wish to really tell about our study material. This is one of the beautiful stories that we have. United Nations printed a paper in Switzerland, and they said that there are 6 values. If you integrate those 6 values into the youth, into the new generation, they will be happy to go through these 6 values, and they will be happy to integrate these values into their system. Now, these 6 values were taken from that paper, research paper, and was integrated through our scriptures. And a study material, a cohesive study material in 2 languages, Hindi and English, was developed under the leadership of Vishnu Swarup Prabhuji. Thank you very much for that. Thank you. Each student in the program, I would also like to tell you that all the 3 programs were very different. All the 3 programs, national, international students were asked 2 things. 1, to give the Olympiad. 2nd, they were also part of the solution. They were asked that you can actually come up and let us know what is the kind of good solution you think for environment. So our students gave us a climate change solution and ecosystem restoration, pollution. So these were the 3 basic aspects which were told to them. And I would like to show you that what our students did. They ideated, they created, and they also implemented in various parts of the country. You can see how our students worked, and these are the assignments which actually filled our heart with happiness and pride, that yes, the students are not just writing the paper, but also implement. A big hand to our students, please. Thank you. Our students from various parts of the countries, various parts of the globes gave us these kind of assignments, gave us these types of solutions. The right-hand side corner, wherein you can see the buckets, the student said, I don't let my mother throw the water which is coming out of our washing machine. We put it there and we clean various other things at our home. So these are our inspirational stories that our students gave us. The glimpses of the assignments.
The social experiment I would like to really tell you. On Janmashtami, we thought that what is it that we can do, because Janmashtami is a space wherein a lot of people come to the temple. What did we do? We made a globe and we put all kind of clutter onto that, and we asked the students, do you like this clutter? The kind of responses that we got, the kind of things that we got, the kind of answers that we got made them not just aware but also a little more scared. And also our generation, my generation, we were more scared that, what is it that we are leaving for our children? Eklavya schools, as I said, the program was very different. Eklavya schools, when 25,000 students participated, there was no mode of online submission of the program. While the public school students or the private school students and the government school students submitted it online, but Eklavya had no disposition of online submissions. We printed around 25,000 books. We gave them 25,000 Gitas, and we gave them printed 25,000 certificates. And all thanks to Mr. Asit Gopal, his leadership really worked so amazingly well that each student was a privileged student to get that book, to get Bhagavad Gita, and felt so happy and pride. And these are some photographs of the examination that was being conducted. Delhi government schools, basically the program was online, and Delhi government schools, I would like to announce this as a big announcement, though my slide is a little later, but still I would like to say, when we say let Delhi breathe, I would like to give this announcement that our union minister has been very, very, very kind and has said that he will grant us 2 lakh saplings for our Delhi children to breathe. Can we give a bigger round of applause? So all Delhi schools, we will be planting the trees, and the trees will be definitely courtesy Ministry of Environment. Our portals were taken care by Tarun Madan under his leadership, and Dr. Sanjeev Singh from Delhi University. I'm very, very thankful and grateful to him. VUolympiad.com, we made 3 portals, VUolympiad.com for private public schools. Examination portal, thanks very much to Learning Spiral. We are very, very thankful to them. And VUolympiad.org under the leadership of Dr. Sanjeev Singh, Sharad, Nipun, Chaman, etc. And we are very, very thankful. As I said, मैं अकेला ही चला था, पर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया. These are all our sponsorships, relationships, collaborations, and we are very thankful because nothing could have been possible without any of these collaborations. Then we also made chatbots for assisting students, WhatsApp, help desk support. I really want to tell you, help desk and our helpline volunteers, all cheers to them, because they have been really doing this service from morning 7 o'clock to sometimes maybe midnight 1 o'clock, wherein students have been calling, मेरा roll number नहीं है, मेरी username नहीं है, मेरा password नहीं है, and all these helpline collaborators have been working selflessly, and we are very, very thankful to all of you. Very, very thankful. Thank you very much. I would also like to tell you that our prizes in both the groups for our Delhi government schools, we looked into, and we said that students will get a Samsung tab as a first prize. So all the first prize winners, probably this is a surprise for you, a Samsung tab, a smartphone as a second prize, and a bicycle as a third prize. Eklavya, we are giving cash prizes with the books and the Bhagavad Gita and the certificates which have been printed. First prize 15,000 rupees, second prize 10,000 rupees, and third prize 5,000 rupees. For our private and national students, we have laptop, bicycle, and Kindle. Our certificates were duly signed by His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, Shri Bhupender Yadav ji, Gaurang Das, and Ripu Daman Bevli. Thank you so much, Ripu Daman Bevli. Thank you for all the things that you've done for us. Thank you very much. A comparative study from where we were and where we are right now. In 2019, only one country, that is our country, participated here. And in 2022, we have 20 countries with us. We had 22 schools in 2019, and 2022 we have 2,000 schools. Students who registered in 2019 was 6,200, and now we have 2,52,500. Our communication strategy heading by Premanjan Das, thank you so much, and our volunteer, definitely people who have been working
hard on this is Manvi and Ananya. Ragini, thank you so much for doing that. They have reached out to making all sorts of posters, collaborators, collaterals, etc., etc. We wanted to position students, parents, teachers, and society. The marketing strategy was going beyond, moving into understanding not just how do we reach them through digital marketing, but also through word of mouth, officials, etc. The media plan were made and things were channelized through our communication head. The logistics were taken care by Shri Das ji. We want to tell you that 718 copies have been dispatched to individual homes. 7,365 copies of Bhagavad Gita were dispatched to 301 schools. 988 Bhagavad Gita were dispatched to 47 different schools within Delhi. And 36 Bhagavad Gita were arranged in 8 different countries outside India, besides what we told about the Eklavya schools. The whole process took a lot of logistics, understanding, database management, shipping to various aspects. We also had team of interns, not just from Delhi, but across the globe. So Sara Mehta, Simran Chawda, Adi Mittal, Ravishi, Dinesh, Reet Agarwal, Sahil Dang. Thank you very much to all our interns. Nothing could have happened. Nothing could have happened if SMC would have not been there. So we are very, very grateful, very thankful to Mr. Subhash Agarwal, Mr. Mahesh Gupta, because when we get these orders from ministries and United Nations that it has to be free, then we don't know how to channelize our funds. So thank you so much to our sponsors. Thanks a lot. Our key donors, Mr. Vijay Uppal, Ashok Agarwal ji, and many other donors with them. We are very, very thankful to our donors. Our supporters, and as they say, nothing is possible, if you don't have good supporters with you. We are very grateful to our supporters. Thank you very much. This project couldn't have been possible without the project head, Karuna Chandra Das. A big round of applause for him. Thank you very much. Sir, it's time again for a big round of applause for the big announcement that you have given. 2 lakh saplings for all Delhi government school children. Thank you very much. All thanks to all of you who have come here, who have been a part of this program. And it has been my honor to present to you this highlight of the program. Thank you very much. Before I close, I would like to really thank 2 very important people, Mr. Avdesh Jha and Ms. Bharti Kalra. They are very personal to me and they are so close to me. I am thanking them because right now the whole program, the understanding of the program is because of sir and ma'am. Thank you so much for that. Thank you. Thank you, ma'am, for sharing highlights with us. We would like to call students from Government Sarvodaya Co-ed Vidyalaya, Sector 8, Rohini, Delhi, upon the stage to present a musical drama on topic Mother Nature, how do we harm it and why we need to protect it, under the leadership and guidance of Principal Mr. Avdesh Kumar Jha sir and Vice Principal Mrs. Bharti Kalra ma'am, choreographed by Mr. Vishal Kohli sir. सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश
I am Earth, where Srishti originates. Everything omnipotent and omnipresent emanates from here. The constituents of life as water, land, fire, sky and wind are under my control. मैं ही सृष्टि की जननी हूँ. मैं पृथ्वी हूँ. सभी सर्वशक्तिमान और सर्वविद्यमान तत्व एवं प्राणी मुझ से ही निकलते हैं. क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, सभी का नियंत्रण मुझ में ही है. Mother, if you are the most powerful divine force and you control all the environmental phenomena, then why do we suffer natural disasters like tsunami, floods and earthquakes? They cause so much of destruction. Do you not care about your own children? सुनो, मैंने तो सब कुछ दिया तुमको, पर आज मैं थक गई हूँ. क्या कभी तुमने मेरे दर्द को महसूस किया है? मेरे लहलहाते खेत, ये सूर्य, ये चांद, मेरी नदियाँ, गहरे सागर, महकती क्यारियाँ, शांत रेगिस्तान, सब कुछ दिया है मैंने. पर तुम लोग स्वार्थ और लालच में अंधे हो गए हो. प्राणवायु को दूषित कर इसका मजाक बना दिया है. मेरी अनमोल देन को व्यापार बना दिया है. साफ पानी को बोतल में बंद करके बेचते हो. जगह जगह कूड़े के ढेर के पहाड़ बना दिए हैं. माँ, हम छोटे बच्चों का इसमें क्या कसूर? Yes, mother, we are not responsible for the increasing pollution and ecological imbalances. हमें तो विद्यालय में प्रकृति की पूजा और रक्षा करना सिखाया जाता है. हम तो ट्री प्लांटेशन ड्राइव में भी पार्टिसिपेट करते हैं. We are learning so many values through the Value Education Olympiad that is conducted by a faith-based organization, ISKCON. I am glad that you care about me. ये धरती, पर्यावरण, वन्य जीवन आदि का तुम्हें अपने हित में दोहन करने का हक नहीं है. सभी मानव इस धरा पर ट्रस्टी हैं, ना कि मालिक. Mother, we know sustainable development is possible through the sensible use of natural resources. It is the responsibility of human beings to conserve these natural resources and safely transfer them to the next generation. माँ, कुछ वर्ष पूर्व जापान के एक विश्वविद्यालय में हमारे प्रधानमंत्री जी से पर्यावरण पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में एक छात्र ने पूछा था कि हमारा पर्यावरण कब सुधरेगा, तो उन्होंने जवाब दिया था, जब हमारी आदतें सुधरेंगी. बिल्कुल सही कहा आपके प्रधानमंत्री जी ने. जब तक मानव प्रकृति की कॉस्ट पर अपनी सुविधा और आराम की जिंदगी पसंद करता रहेगा, अदृश्य प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर घटित होती रहेंगी. क्या तुम नहीं जानते कि प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग जनजीवन और पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है? इसके प्रयोग को रोकना कितना कठिन कार्य है. सबको अपनी आदतें बदलनी होंगी. नो यूज ऑफ प्लास्टिक का अपने दैनिक जीवन में सख्ती से पालन करना होगा. टिक 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 कसम ये खाए रे. टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे. टिक 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 कसम ये खाए रे. टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे. टिक 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 कसम ये खाए रे. टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे. अगर सुन लो जो संभले ना हम तो बम ये फट जाएगा कि बहती सी नदियां का ये पानी रुक जाएगा. अगर सुन लो जो संभले ना हम तो बम ये फट जाएगा कि बहती सी नदियां का ये पानी रुक जाएगा.
नस नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। कल ना हो हाथों में आज है, मौका ये अपना गवाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 कसम ये खाए रे। टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो प्लास्टिक है। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो वही थैली बोतल स्ट्रॉ इत्यादि सर्रे सर्रे में फैला दे। ना घट पाए ना मिट पाए, रह रह के टॉक्सिक बन जाए। इससे छुटकारा तो नहीं पर है एक सरल उपाय रे। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे। जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक आपदाएं घटित होती रहेंगी। याद है भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। अर्थात पूरी धरती, पूरे संसाधन सभी पवित्र हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर इक्वल। सभी जीव एक समान हैं। Dear Mother Earth, what values to inculcate and spread in order to save ourselves from the natural disasters and to protect our environment from ailment? हे जननी, हमें कौन से ऐसे गुणों और मूल्यों को अपनाना होगा ताकि हम अपने आप को इन प्राकृतिक आपदाओं से बचा सके तथा अपने पर्यावरण को बीमार और दूषित होने से रोक पाए। आपको अपने चारों ओर विद्यमान प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना होगा। क्या आप नहीं जानते कि ऑक्सीजन आपकी जीवन रेखा है? क्या इसके अभाव में तुम जिंदा रह पाओगे? याद रखो, प्रकृति ही जीवन है। Worshipping nature is equivalent to worshipping God. Compassionate lifestyle is inseparable from environment. आप सभी को समझना पड़ेगा। Moral education, harmony, integrity and altruism. These are the ways of being unanimous with God. Yes, Mother. We know that United Nations dedicated and concerted efforts to turn this ailing planet into a better place to live in deserve to be well imbibed and spread globally. It is high time we should hold our hands together to pledge. Let's nurture nature to have nurturing life with the ceremonious slogan of United Nations, only one earth, that is Vasudhaiva Kutumbakam. Up. We need to open our eyes and do it now. We need to build a better future, and we need to start right now. We're on a planet that has a problem. We gotta solve it, get involved and do it now. We need to build a better future. Start right now, and we need to start right now, and we need to start right now. Make it a better place for you and for me and the human race. There are people down if you can't
effort that they have done. May we please again give a big round of applause to these students. Thank you very much. Thank you so much. अब हम आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र यादव जी, जो भारत सरकार में पर्यावरण, वन, जलवायु एवं श्रम रोजगार मंत्री है, उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो हमें अपने बहुमूल्य विचारों से अवगत कराएं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र यादव जी, जो भारत सरकार में पर्यावरण, वन, जलवायु एवं श्रम रोजगार मंत्री है। हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में उपस्थित और विशेष रूप से जिन्होंने यहाँ पर प्रकृति की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी है, ऐसे सभी प्यारे बच्चे, उनके पेरेंट्स, इस्कॉन के हमारे सभी संतगण और इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धगण। भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय का जो शीर्ष वाक्य है, जो हमारा मोटो है, वो है प्रकृति रक्षितः रक्षतः। जो पृथ्वी की रक्षा करता है, पृथ्वी उसकी रक्षा करती है। हमने देखा है कि पिछले 200 वर्षों में औद्योगिक क्रांति के कारण मनुष्यता ने अनेक नए अनुसंधान किए हैं, और जो मेरे को लगता है सबसे बड़ा अनुसंधान है वो एनर्जी का है। बिना एनर्जी के हम जी नहीं सकते। आप मेरे को सुन रहे हैं तो ये एनर्जी के कारण है। आप लाइट जल रही है तो एनर्जी है, स्क्रीन चल रहा है तो एनर्जी है। आप गाड़ी में बैठकर आए हैं तो जब तक डीजल की एनर्जी ना हो, आप मंदिर में भी अब तो पूजा करते हैं तो बिना एनर्जी के नहीं कर सकते, प्रसाद भी बिना एनर्जी के नहीं बना सकते। हम एनर्जी डिपेंडेंट जीवन हमारा हो गया है, और इसी के कारण साइंस और बाकी चीज़ों में हमने तरक्की करी है। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक अनुसंधान के लिए और एक कंजम्पशन के लिए। और इसलिए दुनिया में पिछले 50 सालों में, ये अभी जो 2022 गया, इसको हमने स्टॉकहोम 50 मनाया, क्योंकि 1972 में दुनिया इकट्ठी हुई थी कि इसके एनर्जी के एमिशन के कारण जो ग्रीन गैसेस को नुकसान पहुंच रहा है, उसके लिए दुनिया को इकट्ठा आना चाहिए। और उसके बाद 1992 से हमने UNFCCC बनाई, यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर क्लाइमेट चेंज, और फिर हम लोगों ने UNCCD बनाई जो लैंड डेजर्टिफिकेशन के लिए बनी, और उसके बाद हमने बायोडायवर्सिटी कॉप बनाई। पर विषय यह है कि 2015 में जब दुनिया के सारे देश UNFCCC में वापस से इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के एग्रीमेंट को रीराइट करना चाहिए, तब पहली बार दुनिया ने पेरिस एग्रीमेंट में भी लिखा कि इस अवसर पर हम उन दुनिया के उन देशों की सांस्कृतिक, जो आपका वैल्यू बेस है, सांस्कृतिक जीवन पद्धति को स्वीकार करते हैं, जो नेचर को, पृथ्वी को मदर अर्थ के रूप में स्वीकार करती है। और ये भारत की जीवन पद्धति है। और इसलिए 2015 के बाद दुनिया में जब क्लाइमेट चेंज की बात चली, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल सेमिनार का विषय नहीं, इसके लिए क्लाइमेट ओरिएंटेड एक्शन ग्रुप का निर्माण किया। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के बाद दुनिया में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना,
क्योंकि फॉसिल फ्यूल का अगर एमिशन होना है तो उसका अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी होगी। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है, और आज दुनिया में 130 से ज़्यादा देश इसके सदस्य बने हैं। और इसी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से प्रधानमंत्री जी ने 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड का नारा दिया है, क्योंकि धरती पे जो ऊर्जा आती है उसकी 8 गुना ज़्यादा ऊर्जा हमको सूरज देता है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया के जो वल्नरेबल देश हैं उन देशों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसके लिए एक नीति बननी चाहिए, और भारत ने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक फोरम बनाया, भारत सरकार के कैबिनेट ने उसको मान्यता दी। और तीसरा, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, जहाँ सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, वहाँ पर भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर लीड आईटी एक कोलैबोरेशन बनाया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2015 में जब दुनिया के देश इकट्ठे हुए और सबने कहा कि अपने अपने एनडीसीज तय करो, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन सारे देश तय करें, तो मेरे को आपको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में हुआ जिन्होंने अपने लक्ष्यों को 9 साल पहले अचीव किया। हमने कहा हम रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन 175 गीगावाट करेंगे, हमने लक्ष्य को प्राप्त किया। हमने कहा हमने कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी को 40% रिड्यूस करेंगे, हमने लक्ष्य को हासिल किया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में हमारी क्लाइमेट चेंज की इस जंग में भारत की प्रतिबद्धता को हम बताना चाहते हैं। और इसीलिए आज जब इजिप्ट में अभी शर्म अल शेख में नया क्लाइमेट चेंज पे वार्ताएं हुई, तो भारत दुनिया के उन 29 देशों में था जिन्होंने अपने एनहेंस एनडीसी दिए। भारत ने कहा कि भविष्य में हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को 50% तक विस्तृत करेंगे, कार्बन एमिशन की जो रिड्यूस करना है उसको हम 50% के लक्ष्य को लेकर के जाएंगे। और हम दुनिया के उन 60 चुनिंदा देशों में हैं जिन्होंने अपनी लो कार्बन इंटेंसिटी का पूरा 2070 का नेट जीरो का प्लान भी प्रस्तुत किया है। और आज हमारी 17% आबादी है, लेकिन हमारा जो कार्बन एमिशन है वो 4% है। दुनिया की जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी आबादी को जोड़ा जाए तो 17% है, पर उनका कार्बन टोटल एमिशन 60% है। ये हमारी लाइफ स्टाइल के कारण है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में दुनिया को जब पंचामृत का नारा दिया तो उसके साथ ही साथ उन्होंने मिशन लाइफ दिया। और मैं ISKCON के माध्यम से स्टूडेंट से आज इसी विषय की चर्चा करने आया कि मिशन लाइफ माने क्या है। एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। आप कभी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे, नीति आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे, तो हमने 75 ऐसे मेजरमेंट, 75 ऐसे स्टेप्स चुने जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। चाहे पानी का कंजम्पशन हो, चाहे प्लास्टिक को समाप्त करने का विषय हो, छोटे छोटे 75 स्टेप्स के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को लेकर के आगे जा सकते हैं। और इसलिए मिशन लाइफ को जानना बहुत जरूरी है। अभी जो यहाँ पर पूरी एक पृथ्वी के विषय को कहा गया, पृथ्वी की बेबसी को कहा गया, मैं आपके सामने ये कहना चाहूँगा कि हम देश में विकास को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं और एनवायरनमेंट कंसर्न को भी ध्यान में रखना चाहते हैं। विभा धवन जी बैठी हैं बीच में। जब प्रगति मैदान का ये जो हमारा नया जो अंडरपास बना है, तो मैंने इनको ये कहा कि आप अपने टीवी से ये स्टडी करवाइए कि अल्टीमेटली ये जो हमने नया अंडरपास बनाया है इसमें कितना जो कार्बन एमिशन होता था, कितना रिड्यूस किया होगा, आप बता सकते हैं विभा जी? कई लाख टन हमने जो ट्रैफिक जाम के कारण, जो लो स्पीड के कारण जो कार्बन होता था उसको बचाने का काम किया। हमारा एक मॉडल है कि हम एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके भी कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, दुनिया में जब सारी बातचीत चलती है और दुनिया में जब हमको दुनिया के बाकी के देश ज्ञान देते हैं कि आप सारा फॉसिल फ्यूल बंद कर दो, तो हम कहते हैं ये तरीका नहीं है,
क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज के साथ भी लड़ना है, लेकिन क्लाइमेट जस्टिस की भी लड़ाई लड़नी है। हम अपने देश के हर घर में उजियाला चाहते हैं। हम 50% रिन्यूएबल एनर्जी को पे अगर आना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ जब तक देश के अंतिम व्यक्ति तक हम विकास की धारा को नहीं पहुंचा देंगे, तब तक हम डिपेंडेंट भी रहेंगे, लेकिन रिन्यूएबल को बढ़ाने का भी काम करेंगे। हम विकास और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। और इसलिए मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है, आज ही सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कही थी, और ईरान में रामसर में एक बड़ा इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी जिसको रामसर साइट्स कहते हैं। हम आज एशिया में सबसे बड़े देश है, दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे हैं, जिन्होंने अपनी 75 लेक्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिलवाया है। आज हम ये जान सकते हैं कि हम अपने देश के वेटलैंड को बचाने में लगे हैं, क्योंकि वेटलैंड हमारे पक्षियों के लिए, इसके लिए बहुत अच्छी रहती है। और मैं तो कहता हूं कि इस्कॉन के सब जगह मंदिर हैं, आप हर वेटलैंड को अडॉप्ट करिए। ये जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि फॉरेस्ट हमारे लिए हार्ट का काम करते हैं, तो वेटलैंड हमारे लिए किडनी का काम करती है, क्योंकि प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन। और अभी दिल्ली में हमारी सुल्तानपुर की वेटलैंड रामसर साइट है, रोहतक के पास हमारा भिंडावास का वेटलैंड साइट है, ओखला हमारी वेटलैंड साइट है, इधर हस्तिनापुर मेरठ में है, हिमाचल में रेणुका सागर है। भारत के हर देश में हमारी जो झीलें हैं, उनके संरक्षण के लिए हमारी मिनिस्ट्री लगी हुई है। आज हमारे 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, और मैं हमेशा कहता हूं, हम केवल टाइगर रिजर्व्स का बात जब करते हैं तो हम एक इकोलॉजिकल बैलेंसिंग अप्रोच की बात करते हैं, क्योंकि उत्तर की जो नॉर्थ की जो हमारी नदियां हैं वो तो हिमालयन ग्लेशियर से आती हैं, लेकिन बाकी जो हमारी नदियां हैं, महानदी निकलती हो, नर्मदा निकलती हो, कावेरी निकलती हो, कृष्णा निकलती हो, गोदावरी निकलती हो, ये हमारे जो वन क्षेत्र हैं उनमें से निकलती हैं। और इसलिए पिछले दिनों मैं तो चाहूँगा इस्कॉन के माध्यम से हमारा वो एटलस देश के बच्चों को पढ़ाया जाए, जिसमें हमारी 53 टाइगर रिजर्व से 250 वाटर रिसोर्सेज की छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि दुनिया में अगर 70% टाइगर कहीं सुरक्षित है तो हिंदुस्तान में सुरक्षित है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एलिफेंट है तो हमारे 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। अगर कहीं पर एशियाटिक लॉयन है तो 100% भारत में, गुजरात में गिर के अंतर्गत है। हम 125 करोड़ लोगों को तो लेकर ही चलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हम इकोलॉजिकल हार्मनी को भी मेंटेन करना चाहते हैं। और इसलिए 1952 में जो इकोलॉजिकल रॉन्ग हमारे साथ हुआ कि देश में से चीता जैसी प्रजाति लुप्त हुई, तो उसको वापस से लाकर कूनों में हमने प्रोजेक्ट चीता शुरू किया है, जो इकोलॉजिकल हार्मनी को बताता है। ये हमारे देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, और इसलिए मैं कई बार हमारे जब बच्चों को ये वृक्षारोपण के लिए जाता हूं तो मैं कई बार पूछता हूं ये वृक्ष कौन सा है, तो वृक्ष तो लगाते हैं लेकिन पता नहीं है कि कौन सा पेड़ है। हमारे पास 35,000 किस्म की वैरायटीज इस देश में वृक्षों की है। इस देश की बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए हमने पूरे देश में 2,80,000 गांव के बायोडायवर्सिटी क्लब बनाए हैं। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के द्वारा मैं एक पूरे देश में हम ऐप शुरू करने जा रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट को हमने आइडेंटिफाई किया है कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये पेड़ होते हैं, कम से कम 3 किस्म के पेड़। पहला जो इमारती लकड़ी के काम आते हों, दूसरा जिनकी औषधीय कीमत हो, मेडिसिनल प्लांट, और तीसरा जो फॉडर के रूप में काम आते हो, पशुओं के चारे के रूप में। और मैं चाहूँगा कि आप लोग हमसे ये शेयर करिए, कम से कम स्कूलों में ध्यान में होना चाहिए कि हमारे ज़िले में, हमारे ज़िले की जलवायु के हिसाब से ये पेड़ जो हैं ये हमारे नेटिव पेड़ हैं जिसको हमको लगाना चाहिए। और इसलिए अभी शर्मल शेख में जो सबसे बड़ा विकासशील देशों के लिए जो फंड बना, लॉस एंड डैमेजेस फंड, उसमें भारत ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई। उसके साथ ही साथ मॉन्ट्रियल में पिछले दिनों दुनिया भर की बायोडायवर्सिटी के 23 टारगेट किए गए। भारत ने उसमें पूरे विकासशील देशों की और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम किया। और अभी आने वाले पार्लियामेंट के सत्र में हमारी जो बायोडायवर्सिटी और हमारा जो औषधि ज्ञान है, हमारा आयुर्वेद है,
दोनों का समन्वय कैसे हो, इसको लेकर के सरकार एक नई परिवर्तन के साथ आ रही है। इसके साथ ही साथ पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली नैरोबी में हुई। तब दुनिया के सब देशों ने तय किया कि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होना चाहिए। जब हम पहुंचे तो ये शायद अगस्त में असेंबली हुई थी, हम तो 31 जुलाई को बैन का ऑर्डर लेकर के पहुंचे थे और हमने कहा कि जो दुनिया सोच रही है, प्रधानमंत्री जी के निर्देश में हमने सिंगल यूज प्लास्टिक पूरे देश में बैन कर दिया। और 120 mm के जो छोटी जो थैलियां हैं वो बैन कर दी है। और इसलिए बच्चे इतना तो जरूर करें, जब घर में मिठाई का पैकेट आए तो ये पूछें कि भाई इस पे ये चिप्पी क्यों, प्लास्टिक क्यों लगा रखी है। शादी का कार्ड आए तो प्लास्टिक क्यों लगा रखी है। किसी को गुलदस्ता दो, फूल बहुत अच्छे होते हैं, उसको प्लास्टिक से क्यों लपेट के रखते हो। ये अवेयरनेस हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये मान के चलना कि सिंगल यूज प्लास्टिक इतना ज्यादा हमारी नलियों में, हमारे घर कूड़े में, मिट्टी में, और ये कभी खत्म नहीं होता है, पशु खाते हैं। और समुद्र में पिछले साल हमने सितंबर में जब यूनाइटेड नेशन का ये जो हमारा कार्यक्रम चलता है सी को साफ करने का, हमने चलाया। मैं खुद पौंडीचेरी में, मुंबई में, उड़ीसा के, मैं सब जगह पे गया और बच्चों के साथ खूब हम लोग लगे, मिनिस्ट्री लगी। लेकिन हम पूरा समुद्र इतना खराब करके आते हैं। आपको पता है हमारे 10 आज जो दुनिया में जिसको ब्लू फ्लैग जो समुद्र के स्थल है, वो इतने अच्छे हमारे पास समुद्र स्थल है, लेकिन हम प्लास्टिक से जाके खराब करके, हिमालय को प्लास्टिक से खराब कर रहे हैं, वेस्टर्न घाट को प्लास्टिक से खराब कर रहे हैं। और इसलिए अवेयरनेस लाना प्लास्टिक का बहुत जरूरी है। हमने कानून तो बनाया ही है ई वेस्ट के लिए, प्लास्टिक वेस्ट के लिए। और आने वाला समय अब टेक्नोलॉजी का समय है, तो ये वेस्ट टू वेल्थ की ओर जाने वाला समय है। हम पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ऐसे रूल बना रहे हैं कि वेस्ट के द्वारा हम कैसे एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं। और लेकिन ये सारी दुनिया बनाने के लिए जो सबसे बड़ा इस पूरी दुनिया में जो योगदान कर रहा है वो मनुष्य है। और मनुष्य का मन सत्व, रजस और तमस में उलझा रहता है। अगर मनुष्य का मन सात्विक हो, अवेयर मनुष्य बने, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो वैल्यू बेस अगर दुनिया का कोई ग्रंथ है तो वो भगवत गीता है। और इसलिए हमारा जो वैल्यू बेस है ये केवल प्रवचन के लिए नहीं है। हमारी जो वैल्यू बेस सोसाइटी की कल्पना है, ये वैल्यू बेस सोसाइटी केवल अपने पूजा के स्थानों तक रुकने के लिए नहीं है। हमारी सच्ची पूजा तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में है, जब हमारा मन शांत होकर अपने धर्म के अनुसार आचरण करने को प्रवृत्त हो। और इसलिए जो जीवन में जो लड़ाई है, इसको वही कर सकता है जो अवेयर मन होगा, जिसमें अवेयरनेस होगी, जो बुद्धि के प्रकाश में चलेगा। भगवान कहते भी हैं 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, अहंकार और बुद्धि, इसका सबका नेतृत्व वही करती है। उसमें जब सत्व का प्रकाश होगा, उसमें जब अवेयरनेस का प्रकाश होगा, उसमें जब चेतनशील मनुष्य होगा, उसमें जब सृजनशील मनुष्य होगा, उसमें जब कर्तव्य पथ पर चलने वाला मनुष्य होगा, मुझे लगता है वही प्रकृति के भी सबसे ज्यादा नजदीक होगा। और इसलिए हमारा अवेयर मन ये तय कर ले कि मुझे एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल पे रहना है, मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन में मिशन लाइफ को अपनाना है, मुझे अपने पर्सनल जीवन में माइंडलेस कंजम्पशन ना करके माइंडफुल यूटिलाइजेशन करना है। माइंडलेस कंजम्पशन और माइंडफुल यूटिलाइजेशन में अंतर है। और मैं ये मानता हूं कि आपकी ये जो यात्रा 2019 में 6200 विद्यार्थियों के पार्टिसिपेशन से शुरू हुई है, या 2.25 लाख स्टूडेंट तक पहुंची है, आपकी ये यात्रा आगे बढ़े, आपकी ये यात्रा ज्यादा अवेयर और कॉन्शियस मनुष्य का निर्माण करे। जो इस्कॉन की प्रेरणा है, जो भगवत गीता की प्रेरणा है, वो हमारी मिशन लाइफ के साथ जुड़े और एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल का ये संदेश यहाँ से पूरी दुनिया में व्यक्तिगत जीवन में उतरे। आप इस विषय को कर रहे हो, आप इस साधना को कर रहे हो, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ कि ये मिशन लाइफ घर घर में हम सबका संकल्प बनेगा। धन्यवाद।
Thank you, sir, for your inspiring and enriching message to our blooming birds and guests for this commendable and wonderful speech. I hope everyone follows your thoughts and inculcate your values. Now, we would like to request Shri Murli Krishna Das ji to welcome Mr. Nagendra Goyal, sir. Sir is District Commissioner of Kendriya Vidyalayas. Now it is the time we acknowledge the winners of Value Education Olympiad 2022. I request Honorable Shri Bhupender Yadav sir to please come on the stage and felicitate the position holder. Further, I would like to invite Mr. Ripudaman Bevli sir, Mrs. Divya Datta ma'am and Dr. Vibha Daman ma'am onto the stage to felicitate the students. We also like to tell you that position holders are divided into 3 categories. First, international and national school. Winners of Group A, class 5th to 8th are: third position goes to Vivad Malonal Shrikaran Nishkala from Vidya Mandi Senior Secondary School, Chennai. Second position goes to Raghav Krishna Sheshadari Sumant from Delhi Private School, Dubai. First position goes to Brinda Kapoor from the Chintal School, Kanpur. Can we have a big round of applause for the superstar of Value Education Olympiad 2022? Winners of Group B, class 9 to 12th are: second prize, we need to announce the second prize. Second position goes to Raghav Krishna Seshadari Sumant from Delhi Private School, Dubai, of group class 5th to 8th. First position goes to Brinda Kapoor from the Chintal School, Kanpur. Thank you. Let's give a big round of applause. Winners of Group B, class 9 to 12th are: third position goes to Pavni Chauhan from MIET Public School, Meerut, UP. I would request the students to come on stage. Second position goes to Namya Kapoor from the Chintal School, Kanpur. Second position goes to Namya Kapoor from the Chintal School, Kanpur.
And the first prize goes to Radha Gupta from Hansraj Model School, Delhi. Do we have the principal ma'am here, Miss Hemal? The principal ma'am from Hansraj Model School. Okay. Congratulations, Radha Gupta. Can we have a big round of applause for her? We request all the consolation prize winners to immediately come on the dais to have a photograph with the dignitaries, please. Please give them a big round of applause. These are the superstars of Value Education Olympiad 2022. Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause? A big round of applause. The students have joined us from all over the country. Please, a big round of applause. Thank you very much. Thank you, students. You may please take your seats now. We would request our chief guest. Sir, there are few more prizes. Sorry, we are bothering you more. Sorry, sir. Now we will request Mr. Himanshu Gupta sir, Mr. Gayendra sir and Mr. Vinay Gyanendra sir and Vinay Sandana sir to please come on stage to felicitate our second category, that is Delhi Government Schools. The winners of Group A are, third position goes to Anushka Singh. Please have a big round of applause for them. Thank you, Anushka. Second position goes to Yuvraj Tripathi. First position goes to Saida Rahman. Motivate them with your applause. Now we will request Mr. Asit Gopal sir. The winners of Group B are, third is Seema Yadav.
Dr. Riyad, are you able to hear me? Yes, I can hear you. So, sir, your talk is in another 2 minutes. So please be ready. Next prize. Next prize is second position goes to Lakshya Sangwan. Have a big round of applause for him. First prize goes to Vanshika Mittal. Let's give a big hand to the superstars of Value Education Olympiad. We may request our dignitaries to please take their seat, except for Sir Bhupender sir will again bother you. And Mr. Himanshu Gupta, please be on the dais. We would call upon a student, Sia, from Government School Punjabi Bagh, who has made a painting for Bhupender sir. She would like to present him the painting with Himanshu Gupta sir. Can we have a big, big round of applause for this girl, for little girl? The little girl wanted to give a painting to sir and wanted to be a part of this program by telling her artistic skills to sir. Thank you very much, Sia, for all the effort that you've done. Thank you. Thank you, Himanshu sir. Thank you for being there. Sir, abhi ek aur category. Sorry, sir. So we may request Mr. Asit Gopal, sir, again to please come on the dais. Mr. Lakshmi Narayan Goel to be on the dais. Mr. Narendra Goel, sir, to be on the dais. If we have Mr. Subhash Agarwal ji. Okay. Sir, please be on the dais. To give away the Eklavya Awards. The students are joining us on Zoom. The students, okay. So we will just announce the winners. I would like to tell you that these winners are basically in their, tribal centers. They are not here with us. So Asit Gopal sir, who's the commissioner of this particular program, Eklavya Schools, NESTs, will take all the awards from sir right now on behalf of all the school children. So thank you very much, sir. First prize, we would like to announce the names. The first prize goes to Sonari Bandra. From EMRS to Sinduri, Jharkhand. Second prize. Second prize goes to Priyam Sai from EMRS, Reermokala, Sukrapara, Chhattisgarh. Third position goes to Pratigya Chauhan from EMRS, Karahal, Shiopur, MP. The winners of Group B are, third position goes to Simriti Verma from EMRS, Swanaha, Kheri, UP. Second position goes to Lakshmi Tudu from EMRS, Torsinduri, Jharkhand. First prize goes to? And first prize goes to Rahul Rao from EMRS, Paladikur, Chhattisgarh. We would request our interns, if the interns are here, to come and have a photograph with the dignitaries, please. Okay, thank you very much. We request all the dignitaries to please take their seats. Yes, sir. Thank you. Now, we will have a speech by Dr. Iyad Abu Mogli, sir. He is joining us from Kenya. He is director of the United Nations Environment Program, UNEP Faith for Earth Initiative.
Good afternoon, good evening, namaskar. Good evening, sir. Your Excellency. Good evening, sir. Good evening. Hello, good evening. Namaskar, everybody. Your Excellency, Shri Bhupender, Yadav ji, the Central Minister of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, distinguished guests, dear young participants, allow me to express my deepest gratitude and appreciation to the organizers of the celebration and the leaders of the Value Education Program at Eco Village and ISKCON, and to the Government of India for supporting such an innovative approach to education and to the environment. Dear friends, during the Climate Change Convention COP27 that His Excellency just mentioned, that took place in Sharm el-Sheikh and was held last November, Mr. Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, asked the political leaders of our nations. He said, how will we answer when baby 8 billion is old enough to ask, what did you do for our world and for our planet when you had the chance? Al Gore, the ex-vice president of the United States of America, said at the same conference, we face a fundamental choice between the blessings of a just transition to net zero and the curse of our continued dependence on fossil fuel. His Excellency Minister Bhupender Yadav said, this is a testimony to our ethos of collective action for global good. These high-level statements demonstrate how grave climate change threat is and what we need to take urgent action, not only governments, but each and every one of us, to stop further carbon emissions and reverse its trajectory to stay within temperatures that can sustain and support life on Earth. We are not facing climate change threats only, but depletion of our biodiversity resources is reaching very alarming levels, and if not urgently addressed, will impact the very food we eat, the water we drink, and every aspect of life. Climate change and biodiversity loss is compounded by the pollution problem that is affecting the air we breathe and our sacred rivers and our productive soils. While government decisions are very important to fight these environmental calamities, other stakeholders, such as industries, the private sector, universities, and schools, youth and women organizations, as well as religious and faith actors, have important roles and responsibilities to play. But how do we make these challenges known to everyone? It is certainly by awareness and by education. And I am happy that today we are celebrating the graduation of young people of an innovative program on value education. Through values education, we foster tolerance and understanding across political, cultural, and religious beliefs, emphasizing human rights, that protection of the most vulnerable groups, and environmental conservation. Value-based education lays emphasis on the personality development of individuals to shape their future and tackle difficult situations with ease. It molds the children so they get adapted to changing scenarios while handling their social, moral, and democratic duties efficiently. The importance of value education can be understood through its benefits as it develops physical and emotional aspects, teaches mannerism, and develops a sense of brotherhood, instills spirit of patriotism, as well as develops
religious tolerance in students. Alongside education, awareness of environmental issues and their causes is very important to build your knowledge and understanding, shape your attitudes, and form your skills to avoid such challenges or to solve them. We believe that your generation is more capable to innovatively adopt approaches to bring people together, to use technology, and to act in a more educated and responsible way to live in harmony with nature. All religions from around the world consider nature and natural resources as sacred, and that humans have the moral and spiritual responsibility to preserving it and live within its boundaries. In the Hindu tradition, the natural world has an intrinsic value that stems from the principle that God is present in everything. Every Hindu has an obligation to care for the planet. The essence of Islam is to be in a natural state of harmony through respecting the balance and proportion in the system of the universe. In Christianity, humanity is seen as being made in God's image and is given a unique responsibility to care for the well-being of all creation. So protecting the environment is not only a moral and ethical responsibility, but also a spiritual one that connects us to our Creator and to His creation. Environmental ethics and spiritual ethics are not only required at the level of students for education purposes, but also are prerequisites for decision makers to consider when deciding on how our relationship with our natural resources should be. Dear friends, the United Nations Environment Programme's Faith for Earth works at the global level as well as at the national level, such as in India, as a partner with like-minded organizations working for improving the lives of the people and how they live in harmony with nature. We aim to bring the principles of good citizenship, ethical practices, and moral responsibility to be the drivers of doing good to one another and also to the environment. I am impressed by the vast success of your value education program led by our partners at EcoVillage and ISKCON. The commitments we have seen have been exemplary. You, the young people, are our valuable asset. Young people like you around the world are making their voices heard. They are demanding a seat on the table of decision making. Any decision that is taken today will affect you and your future. We want you to go back to your parents, your teachers, and to your political leaders and demand that they protect your interests and not only the interests of the economy today. There are technologies, policies, and practices that are available to ensure we achieve economic growth without degrading our environment. We do not want the electric cars to be the privilege for the elites. We want them to be available to everyone. We do not want to burn fossil fuel and lay hundreds of kilometers of electricity grids, as there are local sustainable energy solutions such as solar systems, windmills, and hydropower stations that can provide electricity to the most remote village anywhere and everywhere. I congratulate you for your achievements in this education program, and I wish that each and every one of you becomes a teacher for your brothers and sisters, even your parents and your neighbors, on what you have learned here. Thank you for being part of this wonderful program, and congratulations. Thank you very much. Namaskar. Thank you very much, sir, for joining us and giving your precious time. Now, I would request our Honorable Chief Guest, Shri Bhupender Yadav, sir, His Grace Murli Krishna Das ji, and His Grace Sukmani Krishna Das ji, to please come on stage and unveil the collaterals of VEO, which is VOE report.
have a big round of applause for so. I would request Mr. Subhash Agarwal ji to please be on the dais, please, to unveil, and we've been waiting for you, sir. Please. I would request all our interns, Dinesh, Sara, Adi, Srishti, Avishi, Manvi, please be on the dais to have a photograph with the sir and the dignitaries, please. Do you know, Isha, a clay pot with honey will always be valued higher than the golden pot with poison. Can you tell me what does this example indicates? I think it indicates that it is not the outer glamour, but the inner virtues that make us valuable. Please. Yes, absolutely. We call upon Dinesh. Dinesh, are you here? Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Please. Thank you. I would like to request His Grace Rukmani Das ji, who is the ISKCON Zonal Supervisor, to introduce us to his valuable thoughts. हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. Everyone, please with me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So I'd like to thank all of you, especially Honorable Minister and all the dignitaries. So I'll start with the anecdote. Once our founder Acharya of ISKCON, His Divine Grace, Abhay Charananvid, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, he was on a morning walk in Boston and he saw outside a flat, outside an apartment, one tap was slightly leaking. The water was dripping. So Prabhupada personally went there and closed the tap. So all the disciples were very surprised. Then Prabhupada said, this is Krishna's energy. We should not waste any amount of Krishna's energy. Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Bhumi apo anal vayu khammana buddhiyevacha ahankaram itiyam me binna pakati ashtata. Earth, water, fire, air, ether and sky, they all are my energies. This is Krishna's energies. So until unless we live in harmony with nature, we cannot please God. And when we cannot please God, how can a living entity be peaceful and happy? So like our Bhupender Yadav ji has said very nicely, we have to make technological development also. At the same time, we have to create harmony with the environment also. And it's a big challenge. It's a big challenge. Now, how to solve this challenge? And Bhagavad Gita has the answer for this. First of all, I like to start. Next slide, please. What this imbalance of values are creating in the society. You see, on an average in US, daily screen use went up among children aged between 8 to 18 to more than 14 hours. Just imagine
After 24 hours, 14 hours are being wasted on the screen. And India is not far behind. And students admit that social media networks are cause of their poor grades. If you ask them, this is the real reason. And pornography. 93% of the boys and 63% of the girls, when they were surveyed, they have said, have seen explicit content before turning 18. Then we can imagine what kind of perverted mentality a student will have. And this we can see in the reality. Recently we have that, what was the name of that girl, Shraddha, who was killed so brutally by that one person called Aftab. And Aftab shared that I got all this idea because I used to saw movies on Netflix. So what we saw, garbage in and garbage out. The average attention span at present is just 5 seconds. Just imagine, 5 seconds. And 10 years ago, it was 12 minutes. This is an indication of the effect of social media and technology. 96% of the students use Facebook, and they get poor grades. And this intoxication, in 2019, 7 million youth aged between 12 to 20 reported drinking alcohol in the United States. This is very alarming. In 2017, 1 in 4, that means 25% children in the age group of 13 to 15 years in India suffer from depression, which affects 86 million people in Southeast Asia. Just imagine, children are getting depressed. What is the age? 13 to 15 years. So much of pressure. Next, please. Smoking, 6,25,000 Indian children aged between 10 and 14 years smoke cigarettes every day. 52% of India's youth even access their social media accounts while at school. 57% being 8 to 12 years old and 47% 13 to 17 years old. This is very alarming. 56,000 people in age group of 18 to 30 years commit suicide across India. And the average suicides in India per day is 371 suicides per day. That comes to around 16 suicides per hour. Now, why it's all happening? You see, over the years we have seen all over the world there's a significant technological advancement. And man is progressive by nature. Everyone wants to progress. And everyone wants to be happy, self-contented, satisfied. But we see, as we are advancing technologically, our happiness index is going down. All of you agree with me or not? It's a paradox. We go for advancement for increasing our happiness, and we have made advancement technologically, but our happiness index is going down. All these figures show depression rate is increasing, suicide rate is increasing, divorces are increasing, terrorism increasing. Why? It is because to have advancement is not wrong, to move at a fast pace is not wrong, but at least we should know the direction. Without knowing the direction, this kind of figures will come. If disha nahi hai, to dasha kaise sudregi? Who will give the direction? This is because our education is basically, the modern day education is just enabling the students to be a good earning person. Learning is basically meant for earning also. Education should be not only for economic growth, it should be for internal growth. That's why we took this small step of including value education in the schools. We took this step. And you will be very happy to know that when this ISKCON was founded by our founder Acharya Srila Prabhupada in 1966, he gave 7 purposes of ISKCON. And the first purpose itself says to systematically propagate spiritual knowledge to society at large and to educate all people in the techniques of spiritual life in order to check the imbalance of values in life and to achieve real unity and peace in the world. You see, government may come out with new rules and regulations, legislations, all kinds of things. They will help to some extent,
But until unless a person, a man doesn't improve his consciousness, his mentality, his value system, it is not a permanent solution to the problems. So we have to correct this imbalance of the values. And what is the imbalance? The imbalance is that we are not able to see the connection of nature with the Almighty Lord. Man is thinking this nature is made for my exploitation. And it's all godlessness because he's not seeing the connection of the God with the nature. Because Krishna clearly says in Bhagavad Gita, Maya adhyakshena prakriti suvete sacharacharam. Under my supervision, this material nature is working. And we exclude God and take material nature. And this, because we have exploitive tendency within us, we like to exploit the nature. And more we exploit the nature, more our lives will become miserable. Because we are violating the laws of the God. The nature is complete in itself. Isho Upanishad, one of the 10 main Upanishads out of 108 Upanishads, Isho Upanishad right in the beginning says, Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamuduchyate Purnasya Purnamadai Purnam Eva Vishishyate. This mother nature is complete in herself. And she can give everything to us. You see, such a wonderful system in the nature. As a human being, we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. And the nature has a provision. Trees, they inhale carbon dioxide and exhale oxygen. Complete system. Krishna says in Bhagavad Gita, Annat bhavanti bhutani parjanyat anna sambhava yagyat bhavata parjanyak yagya karma samudbhava. How do you get grains? We get grains by rains. How do rains come? Rains come by performing yagya. And how do we perform yagya? By our virtuous activities. So until unless we correct this value system, only rules, regulations and legislations may not help us. It may help us to some extent, but we have to go for the change of consciousness, change of value system. And one of the 6 purposes of the 7 purposes, to bring the members closer together for the purposes of teaching a simpler, more natural way of life. So simple living, high thinking, living in harmony with nature, that's what we are trying to teach, the teachings of Bhagavad Gita. The problem is, in this world, we have made some criteria for success. And everyone wants to be successful. And what is the criteria for success? These are external criteria. One should be very wealthy, one should have a big position, power, post, position, wealth, and that person is considered to be a successful man. Nothing wrong in that. But, with this success, what kind of compromises we are making? Am I really happy with this kind of success? Very famous comedian Jim Carrey said that I want each and every person in this world to become famous and rich. And then they will come to realize what does it mean. So, this success is okay, but at the same time, we have to look for our value system also. And the great scientist Einstein used to say, don't strive to be a man of success, strive for becoming a man of values. And this Value Education Olympiad is just a very humble attempt from our side. We have to go a long way because it said the children, they catch the things, If we just profess the values and don't practice it, then it won't help us much. Especially in India, we think that dharma केवल चर्चा के लिए है. धर्म चर्चा के लिए नहीं, धर्म चर्या के लिए भी है, जैसे कि भूपेंद्र यादव जी भी कह रहे थे. So until unless we imbibe these values in our lives, we show our children good examples, and then we propagate the teachings of Bhagavad Gita, our Vedic scriptures, then we can correct this imbalance of values in the society, and then we can live happily in harmony with the Mother Nature. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you very much, sir, for sharing your valuable thoughts with us. They were so harmonious with the atmosphere here today. I would like to assure you, sir, that energy and happiness index of this auditorium is very high. अब मैं हिज ग्रेस गौरांग दास जी, डायरेक्टर ऑफ गोवर्धन इको विलेज, से निवेदन करूंगा कि वह इस्कॉन द्वारा किए गए पर्यावरण पहलों के बारे में बताएं. वह हमें जूम पर ज्वाइन करेंगे.
Justice means giving each person what he or she deserves, or in more traditional terms, giving each person his or her due. The Bhagavad Gita also promotes justice. Around 5,000 years ago, on the battlefield of Kurukshetra took place the greatest warfare. Externally, it is seen the Lord Krishna is inspiring Arjuna to fight, but internally, the region is to promote justice. People are experiencing the effects of climate change in their surroundings. And in the last few decades, unexpected calamities have been witnessed. This makes it amply clear that climate change goes beyond only policy making, and people are finding that they should contribute as individuals, families, and communities to the environment. Toxic greed has contaminated the minds of human society. The environment is simply an external manifestation of the ecology of the mind. We at ISKCON take things, society, and the environment very seriously and have taken purposeful steps. The Govardhan Eco Village of ISKCON is a UNWTO ecotourism award-winning model farm community established to showcase how to live in harmony and respect with people, nature, and the divine, proven as a symbiotic sustainable development model. The Govardhan Eco Village operates with the hub and spoke model. With the hub approach, Govardhan Eco Village has successfully adopted and implemented various green technologies in its 100-acre campus in the Palghar district, Maharashtra. The sustainability initiatives in its campus include organic farming with a unique collection of the rare seed bank, solar energy, the platinum rated green buildings, the pyrolysis plants, the soil biotechnology plant, the biogas plant, and the rainwater harvesting with over 1 crore liter capacity. With a spoke approach, Govardhan Eco Village is working with more than 70 tribal villages to make them sustainable, thus impacting 1.5 million lives. The beneficiaries include over 100,000 cataract patients, 9,000 plus student beneficiaries from 24 schools, and more than 7,000 communities with water resource initiatives and more than 300 women self-help groups being supported. Govardhan Eco Village has been conferred with over 36 international recognitions and awards, including many prestigious awards such as the International Green Apple Award, the IAA Olive Crown Award, the Asian Sustainability Award, the Scotch Renaissance Award, the Griha Exemplary Performance Award, and the Limca Record for converting 4 acres of wasteland into cultivable land, and World Travel Mart's Responsible Tourism Award. The Govardhan Eco Village has been accredited by the United Nations Environment Programme and the United Nations Economic and Social Council as a major stakeholder. ISKCON Punjabi Bagh has already set a sterling example for the community at large by undertaking the following activities. They have developed the waste drain land, the Najafgarh drain land, into a very useful park with lots of varieties of flowers, fruits, herbs, and medicinal plants. They are relying on paper and cloth bags in their transactions to minimize the use of plastic in their bookshop and Govindas. ISKCON Punjabi Bagh try to minimize, although it is not 100% avoided. They use disposable paper plates instead of thermocol or plastic plates in all their functions, although it costs them more, almost 3 times more than the thermocol plates. They use compost machine for reusing all of the offered flowers and organic waste as compost. They use the vegetable waste from the temple to feed it to the cows. There is a dedicated team which takes care of this. In some seasons like summer,
The Punjabi Bagh ISKCON temple makes compost out of them if it is impossible. This temple has also opened organic farms near Sonipat, Haryana on about 1 acre of land as a trial, and have an extra multi-layer farming project, and they plan to expand it by February of this year. During the festive month of Kartik, which is Diwali, the ISKCON Punjabi Bagh team used cow dung lamps instead of clay lamps. And to reduce the carbon dioxide emissions, they use renewable energy, and they have put solar panels of almost 25 kilowatts in their temple building and almost 10 kilowatts in their other buildings, and they plan to expand it to almost 50 kilowatts within this year. They also save and reuse water. They have almost 2,000 liters per day reverse water purifying plant, and in this process a lot of wastewater generally comes out, which is 1:2. For that they have a 2,250 liters of water tanks to store this challenging water. This stored hard water is used for cleaning, filling coolers and washing utensils. The ISKCON Punjabi Bagh team also have a maximum use of CNG vehicles instead of diesel or petrol, and they plan to use the electric vehicles only in the near future. We are also very, very grateful to the Honorable Minister for Environment and Forest, Shri Bhupender Yadav ji, for his kind support to ISKCON for all their Green Temple initiatives, as also my heartfelt gratitude to Dr. Yadav of UNEP and the Faith for Earth program for being constantly there to guide us. It was not a Zoom call, but a recorded video of His Grace Gaurang Das ji. It was really heartening to know about so many eco-friendly initiatives taken by the organization. These are the need of the hour. Every beginning has an end. This beautiful evening is also asking us to bid farewell to our esteemed guests. I request Shri Karuna Chandra Das ji, who is Vice President ISKCON Punjabi Bagh and Project Head Value Education Olympiad, to propose a formal vote of thanks to express gratitude to all those who made this evening a grand success. हरे कृष्णा। तो आए हुए सभी अतिथिगण का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारा ना सिर्फ कार्यक्रम समाप्ति पे है, लेकिन लगभग जो 1 साल की पूरी यात्रा है वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड की, वो भी समाप्ति पे है। शायद इस कार्यक्रम के बाद एक ऑफिशियल एंड इस कार्यक्रम को प्राप्त होगा, लेकिन किसी भी कार्यक्रम को हम शायद पूर्ण समाप्ति तभी दे सकते हैं जब कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद अर्पित कर सकें, जिन्होंने कार्यक्रम को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिस वो ऊंचाई पे है। तो मैं एक ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स पूरे वैल्यू एजुकेशन टीम की तरफ से और पूरे ISKCON संस्था की तरफ से आप सबको और हमारे जो विशेष अतिथि हैं उनको देना चाहूँगा। सबसे पहले शायद भगवान को देना चाहूँगा, शायद उनके बिना तो कोई भी चीज़, कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता। और उसके बाद ISKCON के हेड, ब्यूरो हेड हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, जिन्होंने हमें अनुमति दी इस कार्यक्रम को आगे ले जाने का, हमें प्रोत्साहन दिया, शक्ति दी, ताकि हम पूरी मेहनत करके इतने सारे लाखों बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़कर उनको लाभान्वित कर सकें। So really grateful to His Holiness Gopal Krishna Swami Maharaj on behalf of ISKCON। और ISKCON ने कार्यक्रम को आगे तो बढ़ाया, लेकिन बीच में जो हाथ पकड़ा और एक नई मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे भारत के पर्यावरण मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट श्री भूपेंद्र यादव जी का। एक बहुत स्नेह भरा, प्रेम भरा एक तोहफा पूरी टीम की तरफ से हम उनको अर्पित करना चाहते हैं। तो मेरी उम्मीद होगी और प्रार्थना होगी कि शायद
उनका ये साथ हमेशा हमारे साथ बना रहेगा और हम हर साल एक नई मंजिल तक पहुंचेंगे। इसके बाद मैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का धन्यवाद करना चाहता हूं, डॉक्टर आयात का, अतुल जी का जो इंडिया ऑफिस हेड है, और प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिसर डॉक्टर दिव्या दत्त जी का, जिन्होंने भी अपने एफिलिएशन से हम 20 देशों में इस कार्यक्रम को ले जा सके और हमारे बीच में एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से एक विनर भी आए हैं जो कि इस कार्यक्रम में जीते। तो मैं तहे दिल से यूनाइटेड नेशंस का धन्यवाद करना चाहूँगा, टेरी बॉडी का धन्यवाद करना चाहूँगा, डॉक्टर विभा धवन जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो शायद देश में एनवायरमेंटल एजुकेशन को स्पीयर हेड करती हैं। तो दे आर रोल मॉडल फॉर अस। ग्रीन ओलंपियाड करती हैं जिसमें लाखों बच्चे इस एनवायरमेंटल एजुकेशन में जुड़ते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। फिर उसके बाद विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट हिमांशु गुप्ता जी का, क्योंकि उनकी मदद से हम 2 लाख बच्चों तक पहुँच सके। मुझे याद है कि भूपेंद्र, जब हिमांशु गुप्ता जी से भेंट हुई थी तो उन्होंने कहा सारे स्कूल आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो लगभग 1049 स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से सारे के सारे एक ही बारी में एनलिस्ट हुए और उसमें से 2 लाख बच्चों ने भाग लिया। मैं हिमांशु जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम यूनेप से इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुँच सके, हिमांशु जी की मदद से गवर्नमेंट स्कूल्स तक पहुँच सके, लेकिन हमारे मन में मंशा थी कि हम ऐसे बच्चों तक पहुँच सके जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता। तो हमने सोचा कि हम जनजाति बच्चों तक पहुँचना चाहते हैं, ट्राइबल बच्चों तक पहुँचना चाहते हैं, और फिर हमने अप्रोच किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में, और एकलव्य स्कूल के कमिश्नर असित गोपाल जी ने पूरी मदद की और 25,000 बच्चे 7 राष्ट्रों में से 77 स्कूल जुड़े और उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मैं असित जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जवाहर नवोदय विद्यालय के कमिश्नर विनायक जी, यहाँ पर नहीं हैं लेकिन उनके जॉइंट कमिश्नर एकेडमिक ज्ञानेंद्र जी का, जिन्होंने कहा कि आपकी सेवा में, इस कार्यक्रम की सेवा में, पर्यावरण की सेवा में, प्रकृति की सेवा में, पृथ्वी माता की सेवा में हमारे 650 स्कूल और 3 लाख बच्चे हैं, सब इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्र विद्यालय का। केंद्रीय विद्यालय कमिश्नर निधि जी नहीं आ पाई, लेकिन उनके बिहाफ पे जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं नागेंद्र गोयल जी का, जिन्होंने भी ऐसे ही कहा, उन्होंने हमें एक चिट्ठी लिखी, उस पर साइन किया, आई रिकमेंड ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय शुड पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड बी बेनिफिटेड। नागेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारत के फिट इंडिया एम्बेसडर, फर्स्ट ब्लॉगर रिपु दमन बेवली जी का, तो जिन्होंने कहा मेरी तरफ से कोई भी सहयोग होगा मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विजय सरदाना जी का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एकल ग्रुप का। एकल संस्था ऐसी है जिसमें लगभग कुछ 22 लाख बच्चे पढ़ते हैं पूरे भारत के गाँव में। एकल का मतलब है कि एक अध्यापक अपने ही गांव के बच्चों को जोड़ता है, जिसमें उनकी मदद करता है वो शिक्षित हो सके। तो एकल के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल, जो कि एसएल ग्रुप के भी चेयरमैन हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उनकी मदद से 1000 लोग जुड़े। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जैसे मैं बता रहा था, जब मैं यूनाइटेड नेशन से हमारा पहला टाइप हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से भी हुआ, तो उन्होंने ये कहा था कि आप सब कुछ कर सकते हैं, बच्चों से रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं ले सकते। तो हमें लगा कि हम रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं ले पाएंगे तो कार्यक्रम कैसे करेंगे। जो बच्चा थोड़ा सा पैसा देगा 100-200 रुपये से उसी किताब आएगी, उसी से हम उसको पढ़ा पाएंगे। लेकिन ये था कि आपको भारत में ऐसे कोने में जाना है जहाँ शायद एक बच्चा 100 रुपये भी ना दे सके, उसके लिए आप क्या करोगे। तो हमने कहा उसके लिए फिर शायद बाहर जाके लोगों से मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारी मदद कीजिए कि हम उन बच्चों तक पहुँच सकें। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एसएमसी ग्रुप का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को फंड किया। जैसे अगर वो नहीं होते तो शायद इस कार्यक्रम को हम अंजाम नहीं दे पाते, तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और उसके बाद हमारे इस्कॉन के जोनल सुपरवाइज़र हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। हिज ग्रेस मुरली कृष्ण प्रभु जी हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। पूरे वैल्यू एजुकेशन की टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर मैं शायद नाम गिनने लगूँ और उनकी चीज़ें बताने लगूँ तो शायद
हमारी आधी रात यहीं बीत जाएगी, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। एक ही बारी में अपने तहे दिल से अपनी पूरी कृतज्ञता उनको व्यक्त करता हूं, उन सबके धन्यवाद करने के लिए। हम बोल दो। और इस वाक्य के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब हमारे बीच में जुड़े और इस कार्यक्रम के भाग बने। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सबसे प्रार्थना है, बिना प्रसाद लिए आप इस कार्यक्रम से मत जाइएगा। नीचे ही ग्राउंड फ्लोर में आप सबके लिए प्रसाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। फिर मिलेंगे वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड 2023 में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जिन जिन वॉलंटियर्स ने सेवा की है उनसे प्रार्थना है कि वो अभी डिनर के लिए ना जाएं, कृपा करके इस ऑडिटोरियम में वेट करें। बाकी सब लोग नीचे डिनर के लिए जा सकते हैं। गरम गरम डिनर आपकी इंतज़ार कर रहा है। We hope that you all enjoyed the evening as much as we enjoyed hosting it. Thank you very much for your presence. अगर आप मेरी बातों को सुन पाएं, जो छोटे से नन्हे बच्चे एमसी कर रहे थे मास्टर ऑफ सेरेमनी, शायद उनको भी हमारी तालियों की जरूरत पड़ेगी। जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए भी। धन्यवाद।
मैं रखूंगा सुभाष एक लाइन ही रिकॉर्ड कर बात की बात सुन के इट वाज एन अमेजिंग We are from Chennai. In the very good picture. Memory for the founder of all of TV. सुनो Here's a phone, iPhone we are getting. It was kept in the washroom. So if anyone they want whose phone is it, so they can contact me. My name is Rohit, so they can get the phone. Exactly the last month, the same should be very this year the discount. एक एक बाइट ले लीजिए एक एक करके ले लीजिए बोलो कुछ हेलो ठीक प्रोग्राम के बारे में चले रोल पर्यावरण को संरक्षण अब बोलो हेलो ठीक
पर्यावरण को संरक्षण और संरक्षित करने के लिए लगातार लंबे वक्त से प्रयास होते रहे हैं और कई ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित होते रहे हैं। ISKCON की तरफ से भी कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है, क्योंकि पर्यावरण को किस तरह से संरक्षण करना है, संरक्षित करना है, उसके लिए लगातार पहलें होती रही हैं और इसमें किस तरह से भूमिका को निभाया जाता है और किस तरह के कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं उनसे किस तरह लोगों को अवेयर किया जाता है पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण को किस तरह से संरक्षण करना है। हम इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहाँ पर हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम का मकसद क्या था। सबसे पहले आपसे आपका नाम लेना चाहेंगे और जो कार्यक्रम पर हुआ, क्या ऐसे कार्यक्रमों से संदेश देने की कोशिश की? हरे कृष्ण, मेरा नाम रुक्मिणी कृष्णदास है और एक कार्यक्रम को हम वैदिक एजुकेशन ओलंपियाड कहते हैं और पिछले लगभग 3 साल से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, उनको हम धरोहर में क्या दे रहे हैं। एक बहुत ही ऐसा पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट जहाँ पे सांस लेना मुश्किल है, दूषित पानी, दूषित हवा, सब कुछ दूषित है। हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनके सही मूल्य, सही चरित्र डालें ताकि वो आने वाले वर्षों में इस पर्यावरण की स्थिति को सुधार सकें और हम अपने निजी जीवन को इस ढंग से ढालें, जीवन शैली में बदलाव करें। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं, बहुत अच्छे नियम बन रहे हैं, अच्छे प्रयास हो रहे हैं। प्रयास कुछ हद तक मनुष्य को इस पर्यावरण को दूषित तरह से रोक सकते हैं, लेकिन जब तक हम मनुष्य की आंतरिक चेतना को नहीं बदलेंगे, एक बार हम गंगा जी को साफ कर लें, यमुना जी को साफ करें, दोबारा से गंदी हो जाएगी। जब तक हम उनके आंतरिक चेतना के अंदर के वातावरण को ठीक नहीं करेंगे, बाहर का वातावरण ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि आज मनुष्य भगवान के द्वारा जो दिया जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है भगवद गीता के अनुसार नहीं जी रहा है, इसलिए तरह तरह की कठिनाइयाँ मुसीबतें आ रही हैं। हमारा ये उद्देश्य है इसको वैदिक एजुकेशन ओलंपियाड कहते हैं कि स्कूलों में जो एजुकेशन दी जा रही है उसमें वास्तव में वैल्यू एजुकेशन दिया जाए। जो वैल्यूज़ हैं जिससे एनवायरनमेंट की भी रक्षा कर सके, जिससे में चरित्र का सुधार हो, वो भगवद गीता पर आधारित है। भगवद गीता की ज्ञान जो स्कूलों में जा सके, बच्चों को जा सके, तो उसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि बच्चे उत्साहित हों गीता पढ़ने के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए गए, इन वैल्यूज़ को कैसे इम्बाइब किया जाए, बिल्कुल से अच्छी स्टोरीज़ के साथ और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ उनकी क्लासेस ली गई, उनको समझाया गया। एक बहुत इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपियाड किया गया जिसमें 2,52,500 बच्चों ने भाग लिया। जब गीता पहुँचाई गई तो ऑनलाइन उनका टेस्ट हुआ, ऑफलाइन टेस्ट हुआ और फिर कुछ उनका प्राइज़ वितरण हुआ। और इस कार्यक्रम में हमारे यूनाइटेड नेशंस ने साथ दिया, इंडियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट यादव जी ने साथ दिया, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने साथ दिया और फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से बात की। आपको जान खुशी होगी कि बहुत ही आदिवासी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र जहाँ एक लंबे स्कूल चलाए जाते हैं, वहाँ के 25,000 बच्चों को पहुँच सके 7 स्टेट्स में 77 स्कूलों में। तो इस प्रकार से एक बहुत छोटा सा प्रयास है हमारी तरफ से कि बच्चों को, बच्चे कच्ची मिट्टी के समान हैं, हम उनके चरित्र को तोड़ सकते हैं, अच्छी वैल्यूज दे सकते हैं, चरित्र निर्माण कर सकते हैं ताकि आगे आने समय में हम बहुत जागरूक हो जाए कैसे अपने। स्वामी जी, जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, आज भी इस कार्यक्रम में चर्चा हुई, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम ना कहें, प्लास्टिक का यूज़ ही हम ना करें, लेकिन हमने देखा कि वो बहुत हद तक हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ, उसको हम ये नहीं कह सकते कि बहुत जल्दी हम उसको ख़त्म कर देंगे या एक साइड कर देंगे, प्लास्टिक मुक्त भारत हो जाएगा। मुहिम चलाई गई, सरकार ने बाकायदा इस पर बहुत सारी पहलें की। क्या आपको लगता है कि जो लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं वो कितना दूर अब रह गया? लक्ष्य तो दूर है, लेकिन हमारे प्रयास जारी रहेंगे, उत्साहित प्रयास हम करते रहेंगे और सरकार भी हमें पूरा सहयोग दे रही है, हम भी सरकार को सहयोग देंगे। हम सबको मिल कर करना है। सबसे पहली बात है अवेयरनेस लाना। लोग जानते नहीं है कि छोटी छोटी उनकी आदतों से कितना बड़ा प्रभाव है। पूरी बात करूँ, उनको भी इसका भुगतना पड़ेगा। आगे आने समय पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरे समुद्र दूषित हो रहे हैं, पूरा नेचुरल बैलेंस सिस्टम बिगड़ रहा है। हमारे जीवन मुश्किल है, एक अवेयरनेस लाने के लिए और मनुष्य को अपनी चेतना, अपनी मानसिकता बदलनी है, तो इसीलिए ये प्रयास नहीं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये प्रयास है और हमें लगता है कि ये प्रयास सफल होंगे, क्योंकि अभी लक्ष्य दूर है जैसे स्वामी जी ने बताया, लेकिन शुरुआत शानदार हुई है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में किस तरह से पर्यावरण को संरक्षण किया जाए, संरक्षित किया जाए, प्लास्टिक को हम ना कहें, ताकि अपने पर्यावरण को हम पूरी तरह से बचा सकें, संरक्षित कर सकें, क्योंकि नदियाँ प्रदूषित
प्रदूषित हो रही है, पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है, और इसीलिए आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर एक इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ रही हैं, और उन्हीं ज़रूरतों के हिसाब से आज के इस दौर में जो मुहिम चलाई गई है, हमें लगता है कि वो आने वाले दिनों में बहुत बड़े लेवल पे एक रंग लेकर आएगी। आपसे मैं समझना चाहता हूँ, जो कार्यक्रम हुआ कई सारी चीज़ें इसमें कही गई, जिसमें पर्यावरण को हम किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, संरक्षण दे सकते हैं, और साथ ही साथ प्लास्टिक को ना कहें, क्या ये इतना आसान है क्या? सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, और आपने जो मुहिम चलाई है, शानदार कार्यक्रम किया है, लक्ष्य अभी कितना दूर आपको नजर आ रहा है? तो हमारा प्रयास तो सभी बच्चों तक पहुंचने का है। ये कार्यक्रम बच्चों के लिए इसलिए है क्योंकि शायद बच्चे को नींव है, जो नींव आगे बढ़ के देश को बनाएंगे। तो हम हमारे भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले थे, तो उन्होंने कहा ये कार्यक्रम 25 करोड़ बच्चों के लिए एक क्षेत्र है, दूसरे क्षेत्र के लिए पूरे भारत के लिए। अभी हम 2.5 लाख पहुँचे हैं, टारगेट 25 करोड़। तो क्या, जैसे आपने कहा कि ट्राइबल की तरफ आप लोग जा रहे हैं, तो कितना चुनौती, कितना आपको चुनौतियों का सामना करना वहाँ पर पड़ रहा है? क्योंकि आपने भी अभी कार्यक्रम में बताया कि आसान नहीं है, फंड की भी बहुत कमी है, रास्ते डगमगाए हुए हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुँचना है। तो वही मेरा सवाल था, तो लक्ष्य कितना दूर है? उस दृष्टिकोण में तो लक्ष्य दूर है, क्योंकि जनजाति बच्चों तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। क्योंकि एक तो हमारे भारत के ऐसे कोनों पे है जहाँ पर शायद कोई ट्रांसपोर्टेशन भी साधन नहीं हो रहा है। शिक्षा की प्रेरणा कर रही है। मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूँ बच्चा भी सीखना तो उसका इसको महत्व बताना, वहाँ तक पहुँचना, फिर सारे साधन को इकट्ठा करना, साधन को इकट्ठा करने के लिए सारा मैंने आपसे इसलिए सवाल किया क्योंकि पूरा कार्यक्रम आपने देखा और आप ही ने इसको मैनेज किया। इतना आसान नहीं होता होगा संदेश पहुंचाना और इतने बड़े लेवल पर आयोजन कराना, और ख़ासतौर पर जिस तरह से समर्थन भारत सरकार का भी आपको मिला है। खुद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी यहाँ पर आए थे कार्यक्रम में, कितना सपोर्ट सरकार की तरफ से आप लोगों को मिल रहा है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने? मैं कृतज्ञ हूँ भारत सरकार का, हमें समर्थन उनका बहुत मिला। पर्यावरण मंत्री का ऐसा मिला कि उन्होंने इस कार्यक्रम को अपना एफिलिएशन दिया। जो भी बच्चा इस भाग लेगा उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको हस्ताक्षर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा मिला। हम जनजाति मंत्रालय में गए, जनजाति मंत्रालय में हमें ये सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि आप सिलेबस बनाइए, आप किताबें छापिए, हम आपको वहाँ पहुँचाने का काम कर सकते हैं। तो जो वहाँ के कमिश्नर हैं एकलव्य स्कूल के, जो कि जनजाति स्कूल्स चलाते हैं भारत सरकार के अंतर्गत, तो हमने सारा सिलेबस बनाया, कोर्स मटेरियल बनाया, किताबें बनाई, और उन्होंने सब बच्चों तक हमें पहुंचाया, हमने उनको पढ़ाया और फिर इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उनका इस तरीके से बड़ा सही। एक आखिरी सवाल, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बार बार चर्चा होती है, बात भी करते हैं, और लगातार टीवी चैनल्स, अखबार में, सोशल मीडिया में भी इसके लिए एक मुहिम छिड़ी हुई है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हमें ख़त्म कर देना चाहिए जीवन से, क्योंकि पर्यावरण के लिए बहुत घातक है ये। आज जिस तरह से नदियों का दोहन हो रहा है, पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है, दिल्ली का खास तौर पर जिक्र करें, हम तो दिल्ली में ही हैं, सबसे बड़ा उदाहरण हमारी राजधानी दिल्ली में ये स्थिति है, तो बाकी जगहों पर क्या होगी? तो आने वाले दिनों में कितनी चुनौतियां आपको नजर आ रही है, और क्या ये संभव है कि सिंगल यूज प्लास्टिक, मैं सीधे कहूँ प्लास्टिक को खत्म करना अपनी जीवन शैली से, कितना आसान आपको लगता है? मुझे लगता है, शायद मेरा ये अपना निजी मत है, मुझे लगता है शायद प्लास्टिक ना ख़त्म कर पाए, लेकिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि प्लास्टिक रिसाइकल यूज़ करके हमारे काम में आ सकते हैं। जैसे जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो पूरा प्लास्टिक वेस्ट है। प्लास्टिक शायद ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लास्टिक को रिसाइकल करना ज़रूरी है। तो रिसाइकल करने का सबसे बड़ा चुनौती है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। आपको बताने के लिए पूरा कार्यक्रम हमने आज के दिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री रखा। अगर आप पूरा शुरू से लेकर हम देखेंगे पूरे कार्यक्रम में कोई भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं है। हम जब अंदर घुसते हैं तो होर्डिंग्स थी, तो होर्डिंग में हमने सारा मसलिन क्लॉथ से बनाया, जो हमें 1.5 गुना ज़्यादा महंगा पड़ा, लेकिन हमने प्लास्टिक यूज़ नहीं की। यहाँ कोई प्लास्टिक बॉटल्स नहीं है, प्लास्टिक डिस्पोजेबल नहीं है, प्लास्टिक प्लेट्स नहीं है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोग्राम हमने रखा ये उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारा देश हो सकता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे देश में हो सकता है। धन्यवाद स्वामी जी, आपने चर्चा की। तो ये कार्यक्रम था और इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे, और ऐसे कार्यक्रमों की खास तौर पर ज़रूरत है, क्योंकि प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात आज इस कार्यक्रम में कही, खुद केंद्रीय मंत्री ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि भारत सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है इस दिशा में, क्योंकि पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करना है, पर्यावरण को संरक्षण करना, संरक्षण करना, प्रदूषित होने से बचाना है, और यही
सुनो ना, नीचे मैं एक बाइट लूंगी, आपसे इसमें कैच हो जाएगा। सुनो नहीं, मैं ऊपर हूँ ऑडिटोरियम में, आप सर आप आ जाइए हमारे साथ, आए मुझे ये रिकॉर्ड करके मेरे को चाहिए होगा क्लिप चाहिए आपको? हाँ आपके इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा ना, इसमें ऑडियो आ जाएगा ना? आपने टिकट ली?